Good morning, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and this is our editorial analysis. Am I clearly visible and audible to everyone? Very good morning. Can you hear and see me very, very clearly, everybody? Good morning. Yes, clearly visible and audible. Okay, so seeing you after one long day, and the articles that I've bought in today's class, the two articles, one article is from yesterday's Hindu and the second article is from the New York Times, which will blow your mind. Not with the topic, but with the language. Are you excited to read that? Been a while, we've taken a very difficult article. So, it's about organizations and how organizations take steps. So that's the article. मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ और बहुत ठंड हो रही है इधर. ठंड. You heard me right. I'm not saying गर्मी हो रही है. I'm saying ठंड हो रही है. It's 20 degrees where I stay. It rained all night. If that makes you jealous enough. Okay. And but I'll be happier when you come back to my Hindu classes and you tell me, ma'am, I got through this college, and you are happy that you get into your dream NLU, and you come back and tell me, ma'am, this is what happened. Yes, Mahi. So that's what is going to be. No, it's in Bangalore. So that's what's going to be making me the happiest. One long year of your and my hard work, and that will make our year worth it. So I'm waiting. We have roughly not even a month to go for CLAT. Are you guys nervous? Are you nervous? Or are you excited? Or are you indifferent? What do you feel right now? Nervous, excited, indifferent, happy that finally your hard work will pay off? How do you feel right now? I'd like to know that. Absolutely, Nikita. Absolutely. Little nervous? Okay. Nervous? डर लग रहा है? Everyone says nervous. थोड़ा टेंशन तो देखो जरूरी है. It's okay, Karthik. It's gone. It's bygone. So थोड़ा nervousness जरूरी है. ठीक है? But then very nervous नहीं जरूरी है. थोड़ा nervousness तो देखो मुझे भी होता है. अभी भी जब आप क्लैट देने जाते हो, मुझे लगता है मेरा एग्जाम है. थोड़ा nervousness ठीक है. बट बहुत ज्यादा नर्वसनेस नहीं होना चाहिए. आपको अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने हार्डवर्क करा है और ये हार्डवर्क मुझे पे ऑफ करेगा. यस. तो हार्डवर्क करने वाले को ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं with the articles. So we don't have a lot of vocabulary today. I think only 2 slides of vocabulary, but then this New York Times article is tricky one. So make sure you write down the summary under my video. I'll be checking that, and we'll look at important articles from various sources by the end of the class. Let's start with the vocabulary. Slide number 1. Impetuous is an impulsive behavior. Okay, something that you do suddenly without a lot of thought and deliberation is impetuous behavior. The ending of the Cold War gave new impetus to idealism, sudden upbringing to idealism. So without a lot of thought, a sudden outcome, a sudden change was idealism. This sudden decision, sudden output will be impetuous, an impulsive one without much deliberation and thought. So that's what impetuous mean. माही, सिंपल सी बात याद रखना, अगर कहानी सुनाई जा रही है
ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वो नैरेटिव होगा विदाउट अ डाउट. Whereas expository can be explanation of any event, description, समझाना, डिटेल्स देना. ठीक है, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. अगर ये कहानी है तो वो नैरेटिव होगा. ओके, डर लग रहा है कि मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही है. हर्ष, मजाक की बात बता रही हूँ, सीरियसली मत लेना. दो ही तरह के लोग होते हैं जिनको नर्वसनेस नहीं होती है. एक वो जिनको सब कुछ आता है, और एक वो जिनको, बड़ी मजाक की बात है, नर्वसनेस नहीं हो. यू आर ब्लेस्ड. स्टे लाइक दैट. Okay, so spontaneous is impetuous. Correct, that's impetuous. Next word, seminal. So seminal is an event or a task that influences things that will happen after the task is ended. So a seminal work on chaos theory, a work that will influence the later on developments over that theory, over that work. So कोई भी philosophy है, कोई भी theory है, उसको हम seminal बोल सकते हैं if it influences the forthcoming events dependent on that. That's seminal. Next word is quintet. कोई question किसी का? Nandini, if you haven't done it yet, don't do it now. Absolutely, Anushka, that can be expository. Okay? ठीक है, आगे देखते हैं. Quintet. So quintet, simple, group of 5 people, any type of 5 things coming together, that's quintet. A novel about quintet of interrelated lovers. 5 lovers, they're interrelated. My God. कैसी love story है ये? So basically 5 people or 5 things coming together is quintet. A group of 5 things or 5 people. Last word, escapist. Let's understand. Consequential for seminal, yes, related word है. Okay, and leverage नहीं होगा बच्चे. Hi Akansha, good morning. ठीक है, next one, escapist. पता है क्या? I think Harsh, आपके लिए escapist is a better word. So basically a person who wants to be distracted from unpleasant things in life, and it's actually a blessing if you're able to escape from that. You save yourself from a lot of torture and anxiety and trauma. So you're absolutely blessed if you're not worried. So escapist वो person होता है जो ठीक है कुछ सोच के अपने आप को pacify कर लेता है, and he is not affected or distracts himself from unpleasant things around him. That's an escapist. Nandini, revise all the words that you've done till date, all the chapters that you've done till date on vocabulary, and solve more questions. ठीक है? हर्ष गायब हो गए क्या? Not exactly opposite, but related हो सकता है Violet. Exact opposite तो नहीं होगा. Hi Tejaswini. So that's slide number 1. Screenshot ले लो जल्दी से. Next slide. Here we go. No, Anushka. Hi Abhijit. Slide number 2. Okay, so ये remittance और defunct फिर से आ गए. ठीक है. So that's all. Remittance is जो amount of money आप pay करते हो, usually गिफ्ट के फॉर्म में या पेमेंट के फॉर्म में, उस अमाउंट ऑफ मनी को आप रेमिटेंस बोलते हो. टू रीमिट. सो कंप्लीट योर बुकिंग फॉर्म एंड सेंड इट टुगेदर विद योर रेमिटेंस, सेंड इट टुगेदर विद योर पेमेंट. So it could be a payment, it could be a gift, but you giving something in terms of money. The money that you give is the remittance. It could be salary, it could be payment, it could be gift, whatever that you give. That's remittance. अच्छा, okay. You did not comment. I actually said it honestly. Escapist होना काफी अच्छी बात है बच्चे. I am an escapist. रिया फिर से समझाती है. एस्केपिस्ट वो होता है जो ना दुनिया में बहुत सफरिंग है, बहुत परेशानी है, बट ही एक्चुअली दैट पर्सन एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द सफरिंग एंड ही इज काम एंड ही इज क्वाइट. उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो खुद डिस्टर्ब नहीं होता है इतना ज्यादा
अपने आसपास की चीजों से, उसको हम एस्केपिस्ट बोलते हैं। ओके, उसको भी रेमिटेंस बोल सकते हो माही आप। यस, ओके, हाय जिया, गुड मॉर्निंग। एनर रेमिटेंस, यस एग्जैक्टली कार्तिकेय, यू राइट। नेक्स्ट वर्ड डिफैंक्ट, सो हार्मलेस, इनइफेक्टिव, जिसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अ डिफैंक्ट कमीशन lacks the oversight capability necessary. It's defunct because it's not very effective or it does not cause any harm to anyone. That's defunct. And the last word is amorphous. Amorphous is something that doesn't have a clear shape or size. So an amorphous characterless conurbation, it doesn't have any character, it doesn't have any shape, it's basically vague. That vagueness is amorphous. So slide number 2, jaldi se screenshot le lo sab log. Hi Vikash. वैभव का क्या क्वेश्चन है, फिर से बताइए निकिता, आई मिस्ड इट। वैभव 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 वैभव, ओके। सटायरिकल, इंडिग्नेंट, एसर्बिक, मॉडलिन। मैम ये टोन डिफाइन कर दीजिए, इतने सारे टोन। अच्छा जी, ओके बच्चे, ये बहुत लंबी चल जाएगी क्लास में। टोन ऑफ द ऑथर में ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ आपको एसर्बिक टोन क्या होती है। एसर्बिक इज वेरी वेरी रूड, ओके, वेरी वेरी हार्श, वेरी वेरी क्रिटिकल। बाकी लोग बताएंगे। सार्डोनिक टोन कौन सी होती है, कौन बताएगा? इंडिग्नेंट बताइए, मॉडलिन बताइए, एवरीवन। ऑफ कोर्स शाही। बताइए व्हाट्स मॉडलिन, व्हाट्स एसर्बिक। मैंने आपको बताया बहुत रूड एंड क्रिटिकल। व्हाट इज सार्डोनिक? who's going to tell me sardonic, who's going to tell me indignant, and who's going to tell me maudlin? Hi Tanya. Acerbic is bit censuring, yes it is. Sardonic is mocking, आप बहुत सुपीरियर हो, सब आपके नीचे हैं, बहुत ही डेनिग्रेटिंग और कॉन्डिसेंडिंग टोन, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानना। मॉडलिन इज सैड एंड इमोशनल, यस। सटायरिक इज ह्यूमर विथ अ टिंज ऑफ सार्केज्म। सटायरिक होता है जब आप कटाक्ष, इन हिंदी, जब आप किसी सोशल इश्यू के ऊपर मजाक उड़ाते हो, बट वो मजाक के सेंस में नहीं होता, ह्यूमर के सेंस में नहीं होता, वो उसकी कमी निकालने के लिए होता है, टू फाइंड आउट फॉल्स इन इट। Acerbic is harsh and bitter, correct. Sardonic is mocking, correct. Maudlin is sad. Okay, I've explained all the tones. चलिए, so I hope screenshot ले लिया। आर्टिकल्स पे चलते हैं। Arrogant for sardonic, correct. Indignant is anger. Indignation is anger, not critical but anger. Nikita, indignant is anger. Yes Ragini, you're absolutely correct with sardonic. Okay, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सो क्या 23 टारगेट कर रहे हो? कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च हो गया है, जल्दी जल्दी से एनरोल कर लो। लेट करोगे तो लॉस होगा पढ़ाई का, लेट मत करना। पेट्रोफिक्शन, पेट्रो एंड फिक्शन। फिक्शन आपको पता है, मन की बनाई हुई कहानियां, नॉट रियलिटी बट इमेजिनरी स्टोरीज, दैट्स फिक्शन। पेट्रो, लाइक पेट्रोकेमिकल्स, लाइक पेट्रोलियम, like oil, like diesel, like petrol. What is petrofiction? Did you read this article, everyone? It appeared in yesterday's Hindu text and context. Did you read this article? पढ़ा था? How many of you read this? It's a brilliant article on literature, on petroleum. Yes, Vikash, you could call it utopia, is an example. ऑयल की बात ना करिए, बहुत महंगा है, इसीलिए तो बात हो रही है सत्य प्रताप, इसीलिए तो बात हो रही है क्योंकि वो बहुत महंगा हो गया है। यस, रेड इट, इट वाज लवली। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, जितने लोगों ने नहीं पढ़ा साथ में पढ़िए, ये पेज पढ़िए। सेंड मी डन व्हेन यू डन। Read this page and send me a done.
So the question is, हम पॉलिटिक्स पे इतने फिक्शन नॉवेल्स देखते हैं, हम क्राइम पे इतनी फिक्शन नॉवेल्स देखते हैं, we see so many fiction novels or so many things that are amalize in the society, but why don't we see fiction so often written on petroleum and the crisis related to it and stories related to petroleum? Why don't we see that? That's the basic question that's put up in the passage. And writers have been slow to wake up to writing about the impact of oil on life and oil on politics. I'm sure आप लोग बहुत टाइम से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो और आपको पता है कि कैसे ऑयल पॉलिटिक्स क्रिएट करता है. हमने बहुत सारे कंट्रीज का एग्जाम्पल देखा. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस कंट्री ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऑयल के लिए, और कैसे हमने अफगानिस्तान में, कैसे हमने सूडान में, कैसे हमने और कंट्रीज में फाइट्स देखी, कैसे हमने इजराइल में फाइट देखी. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो सकती हैं अगर आप इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज with their politics. So the world is grappling with sky high prices for crude oil. World का तो पता नहीं, our country certainly is grappling. World also is grappling with the high prices of crude oil. And because of the Russia-Ukraine crisis, Ukraine क्योंकि impact हुआ था तो price तो up होना ही था. Everybody knew that. With gold up and down, going up and down, automatically crude oil का price भी up and down होना था. It seems an appropriate time more than ever to understand the cultural impact of oil encounter on literature. So the article is about literature. Exactly, Sabarth. Sri Lanka. Yes, Sri Lanka as well, Vikas. You're right. Yes, Akansha. Correct. Okay. So the idea is that the article talks about literature written on oil, crude oil. The economic, political, socio-cultural impact of oil was major impetus for globalization and free market trade. So 1990 में जब globalization हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा impact आपने इसी चीज में देखा, oil में. The discovery of oil in no ambiguous terms revolutionized the world. उसके पहले सब कुछ manual था, but oil made everything automatic. Yet, Amitav Ghosh asks is in his essay, Petrofiction, the oil encounter and the novel, that's the name of the essay. Why, when there is so much to write about the oil, nobody actually decides to write about it? इसीलिए क्योंकि ये debatable है? Probably not, क्योंकि debatable इससे ज्यादा politics है. और हमने जॉर्ज ऑवेल पढ़ा है और हमने देखा है कि कितना सटल और कितना शार्प वे है जॉर्ज ऑवेल का ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनी काइंड ऑफ. हमने सब तरह के रेवोल्यूशन पे देखा, हमने मोटरसाइकिल डायरीज पढ़ी है. ये सब चीजें रेवोल्यूशन पे, पॉलिटिक्स पे लिखी होती हैं, वो ज्यादा डिबेटेबल है. येट पीपल रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग ऑन ऑयल. व्हाई इज दैट सो? दैट्स अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन अमिताभ घोष's paragraph passage. The distinct lack of prose words from this encounter, this prose, okay, is of this encounter is surprising to say the least. It's of course surprising for all of us. Ghosh himself gives us a couple of reasons why not many petrofictions have been written. So he explains why people don't write about petrofiction. Let's see that. Okay, अब देखो ये लाइन पढ़ के आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि आगे ये लिखा हुआ होगा that why according to Amitav Ghosh people don't write on petrofiction. Let's read the next page. Send me done when you're done. विकास, पार्टली यस बट नॉट कंप्लीटली. बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस पर डिपेंडेंट होती हैं. So
You see, black gold is what petroleum, the crude oil is called. और जब हम crude oil की बात करते हैं तो गल्फ का नाम, it cannot be far away. And when we think of Gulf, we think about desert and dry and hot sun and oil. We think about these things. These words are synonymous to the Gulf. And one more word is synonymous to the Gulf, and that's luxury. Where did they get all the money from? ये सारे गल्फ कंट्रीज में जो लड़ाइयां हो रही थी, ये क्यों हो रही थी या हो रही हैं, अगर मैं बोल सकती हूँ तो, that's because of the money that came in from selling of crude oil through the whole world. That also is accompanied with migrant laborers. I'm sure you must have heard of so many stories around you of people migrating to the Gulf and working there. I have heard of so many of them. Maybe because I am a person who talks a lot, that's why maybe I listen to a lot of stories too from people. Many Indians as well have migrated to the Gulf for a livelihood because there's a lot of money there. The land is barren, but there's a lot of money through crude oil. And since there's a lot of wealth, with a lot of migration and a lot of labor work and a lot of hot in the sun, writing about that becomes very difficult along with the luxury and the politics that is accompanied with it. Thus, Amitav Ghosh appreciates Rahman Munif because he's written something about petrofiction. The name is Cities of Salt in 1984, the first of his quintet novel series. So he's written 5 novels in the series. The first one talks about the cities of salt, where he discusses the black gold in terms of petrofiction. Munif introduces us to the Wadi, an oasis in the middle of the scorching desert which offers solace to travelers and day traders. You know what's an oasis, right? Oasis होता है जहाँ एक डेजर्ट में पानी होता है और ट्रीज होते हैं और आपको खाना भी मिलेगा उधर, पानी भी मिलेगा उधर, जो यूजुअली कॉमन नहीं होता डेजर्ट में. सो देयर एन ओएसिस वादी नाम से. ही प्रेजेंट्स इट एज अ यूटोपिया वेयर पीपल कम टू कॉन्ग्रीगेट, सेल देयर वेयर्स एंड टेल स्टोरीज एंड देयर एडवेंचर इन द डेजर्ट. सो ऑब्वियसली बिकॉज वही सब गैदर होते हैं, दैट्स वेयर फूड एंड वाटर इज, एवरीबडी कम्स टुगेदर, इट्स अ यूटोपिया. बहुत हैप्पी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, पीपल कम शेयर द स्टोरीज एंड एवरीथिंग, बहुत प्लेजेंट है. ठीक है, गुड. आगे देखते क्या होता है स्टोरी में. पढ़ो वादी में क्या होता है. रीड द होल पेज एवरीवन. यस ऑफ कोर्स, सऊदी. Spatial marker. Yes, let me tell you what a spatial marker is. I don't know where is it exactly written. Spatial is having a space. So मुझे point out करके बताओ, मैं आपको लाइन पढ़ के बताती हूँ. Where is spatial marker written? Yes, here. Okay. It's a special marker for oil का मतलब हुआ, 2 लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है. स्पेशल मार्कर फॉर ऑयल इज, वो अपनी एक जगह बना के रखा है वर्ल्ड में. अगर आप ऑयल की बात करोगे तो उसकी प्लेस वहां, गल्फ की प्लेस उस कहानी में परमानेंट है. इट होल्ड्स अ स्पेस इन द स्टोरी, इट होल्ड्स अ प्लेस इन द स्टोरी, इट होल्ड्स अ मार्क in the story. That's a special marker. And then this line is a beautifully written line. It says oil evokes fluidity. 2 तरीके से फ्लूइडिटी है. एक, क्योंकि ऑयल अपने आप में फ्लूइड है, वो फ्लो करता है, ये फ्लूइडिटी. और दूसरी, फ्लूइडिटी ऑफ मनी. जहां ऑयल है वहां पैसा आएगा, बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड नीड्स क्रूड ऑयल. So it is fluid because of its texture, because of its state, because it flows. It also refers to fluidity in terms of fluidity of money. The money will flow in. So that line also is an important one. Okay. Next page में देखो वादी में क्या होता है. Read the page. Satya Pratap asked me, 30% of my salary goes to taxes. 30%. And migrants as well. Yes, correct, Shreya.
वेरी गुड मूवीज, वेरी गुड. कोई वीडियो टीम की भी सुन लो. यस, मुशर्रफ. फ्लैट 30. डन. तो क्या होता है वादी में आगे? नॉट ए वेरी वेल्दी प्लेस, बट दे आर हैप्पी. जो कुछ है उनके पास, फूड है, लैंड है, वो खुश है, इसीलिए यूटोपिया बोला उस प्लेस को, राइट? हाउएवर, अब कहानी स्टार्ट होती है. ऑल दोस चेंजेस विद द कमिंग ऑफ अमेरिकन्स. वो बोलते हैं, अच्छा, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. व्हेन दे डिग फॉर ऑयल, you know, I've been born and brought up in Assam, and एक बहुत बहुत पॉपुलर ऑयल रिफाइनरी, आपने नाम सुना होगा उसका. द नेम इज Digboy. Okay, that's the name of the place where the refinery is. And you know why is it named Digboy? When Britishers came, they wanted to find out oil, and they asked, "Come on, boy, dig it, dig." And that's how the name Digboy uh, came into existence. That's very close to my hometown. So it has a big, big, huge refinery. And that's when American came and they started digging for oil. In the blink of an eye, everything changed. It was no more utopia. It rather became dystopia. Yes, you know about that, correct? Yes, that's Digboy, correct. So the oasis disappears. Pani, trees, nobody cares. We need oil rigs. We need machines. We need people. We need laborers. And क्योंकि वहां के लोग sufficient नहीं थे, more people came in. Travelers, stories, everything ended. And when the rig suddenly lays off workers, the people organize a strike, which results in reinstatement of the laborers who were fired. तो strike होने लग गई, labor union बनने लग गए, लोग काम करने लग गए. नॉवल पॉजिटिव नोट पे एंड होती है, बट इट्स रादर एन एस्केपिस्ट, क्योंकि ऐसा पॉजिटिविटी है नहीं रियलिटी में इफ यू लिंक इट टू क्रूड ऑयल. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई इसको एस्केपिस्ट बोला है. ऐसे बोला है कि आपने ना सिर्फ अपने मन में कहानी बना ली कि मैं भाग जाऊंगा दूर रियलिटी से, बट रियलिटी ऐसी है नहीं कि वो पॉजिटिव नोट पे एंड हो सकती है. इट्स ओनली एन एस्केपिस्ट बिलीफ. द ओइल रिग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सरप्लस ऑफ माइग्रेंट लेबर. Language and cultural barriers prevent them from forming any organizational cross networks, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग माइग्रेंट होके आते हैं. तो ये जो स्टोरी थी यहाँ कि उन्होंने यूनियन बनाया और जिनको फायर किया गया था उनको वापस जॉब में रख लिया गया. भाई इतने लोग हैं लेबर वहां कि अगर आप कोई फायर भी हो जाता ना तो किसी को नीड नहीं उसको वापस रखने की. देयर आर गोइंग टू बी मोर लेबर अवेलेबल फॉर वर्किंग. And since there's so much diversity in terms of language and culture, they cannot form a union like the story did, and that's why the story is called an escapist. While the novel and then language and cultural barriers prevent them from forming any organization, even if they did, the nations where labor rights are next to non-existent for foreigners, unionizing will only lead to violence, oppression. So foreigners, women की बात तो हम नहीं करेंगे गल्फ में क्या होता है. विल टॉक अबाउट फॉरेनर्स, क्योंकि उनके राइट्स नॉन एग्जिस्टेंट है. तो तुम जाके, हमने इतनी स्टोरीज पढ़ी है कि आप जाके फंस जाते हो, यू कांट कम बैक, यू स्टक, योर बॉन्डेड लेबर हैपेंस. heard so many stories. So that's why this positive note is called an escapist one. आप सिर्फ भाग रहे हो. Exactly, Akansha, correct. Oldest of the oil refineries, correct. जीके अच्छी है तुम लोगों की. आगे देखो क्या होता है. Another fiction novel. So the protagonist Kareem from Qatar emigrates to the US to work for a tech company. Okay, while working there he perfects a computer program which predicts market fluctuation in oil stocks by analyzing Western news reports on West Asia. Brilliant. Market fluctuation already predict kar dena, aur wo bhi computer program ke through. That's brilliant. Kareem goes from being a firm believer in the American dream to the potential of the oil stock to make him rich, to questioning everything around him, starting from his boss, Mr. Shrub. Now, he was a believer in the American constitution, a believer in the American dream, but now he changes. He starts questioning everyone. सबको question करने लगता है. प्रोग्राम जहां बैठ के बनाए, जिस टेक के लिए बनाए, सबको क्वेश्चन करने लग जाते हैं. क्या हो रहा है ये? Why am I doing this? In the end,
We see him refusing to give over the program to his employer and instead opts to release the code as an open source through an academic paper. Maybe some hatred in his mind? Could be. Wayne showcases the release from the deep-rooted effects of oil and its capital, much like Munich in the way that is both daring and unrealistic. So possibly he knows what America did, and that's why he's so unhappy with the American dream, and he decides, I'll not sell it to my employer. I'll just open it up and sell it in an academic paper or publish it in an academic paper. So he's pretty frustrated here. That's another novel that's written on petrofiction. Read the page, send me a done. That's the second last page. Hi Panda. Yes, Shazia, I will. Right to sit. Yes, Kartikeya, you're right. So, हमारा country is not far away from this entire impact, right? हमारे country से भी migration हुआ है, हमारे country में भी changes आए हैं, और आपने देखा होगा गल्फ से आने वाले लोग usually all decked up with a lot of gold. देखा है सर, movies में तो देखा है मैंने. Reality में I have not come across such, but movies में मैंने देखा. When they come back from the Gulf, शाजिया लेट ज्वाइन किया बच्चे. पहली चीज यही समझाई थी क्लास में मैंने कि पेट्रोफिक्शन क्या होता है. पेट्रोलियम पे फिक्शन. So when the oil boom of the Gulf countries first hit the world, Kerala was undergoing a major unemployment crisis. तो उनको पता था employment कहाँ मिलेगा, and therefore the opportunity to go across the seas to the Gulf and soon getting a lot of money with colorful shirts and bell-bottom pants and gold watches became a popular culture in Kerala. हमने देखा ये, क्योंकि इंडिया कैसे दूर रह सकता है ना. आगे देखो क्या होता है. The remittance from migrant labor helped the state build its reserves at a time when industry was lacking. Unemployment at its peak. It developed through the money from the Gulf. Till date, a significant part of Kerala's GDP is made from foreign remittance from the Gulf. They get money from the Gulf because people from Kerala work there. However, this migration for the longest time hid its most terrible stories. अभी तक तो देखो सब यूट्यूब पे लग रहा है, इतना पैसा आ रहा है, गल्फ में काम करते हैं, सब बढ़िया है, गोल्ड वॉचेस पहनेंगे, बेल बॉटम पैंट्स पहनेंगे. इज इट सो प्लीजिंग ऑलवेज? नो नो नो, देयर आर टेरिबल स्टोरीज. सो Benjamin's Goat Days tells the tale of Najib, whose oil-ridden Gulf dreams went awry when he became a victim of labor fraud. सबसे ज्यादा ये स्टोरी सुनने में आती हैं, labor fraud. Promising you to find a job in the Gulf and then making you a bonded labor or making you work as a domestic help at somebody else's home, or prostitution. There are many, many stories that come out. He was kept as a goat herder while he was promised a job in an oil refinery. He works as a goat herder. Story पढ़ो, बताऊंगी नहीं मैं ये. Simple story है, यहाँ तक पढ़ लो. How does he escape? Sad reality. पढ़ लो उसको. Human trafficking, yes, Samarth. So there are still many, many, many tales to be told about the desert, yet they are far, far from over. We need many, many stories written on petrofiction. What's the tone of the author, everyone? क्या है tone बताइए? I haven't seen that movie, Vikash. I think I'll have to see that. What's the tone, everyone? Tone बताइए.
एनालिटिकल? नो, नो। क्या एनालिसिस कर रहा है? इट्स एक्सपोजिटरी, इट्स एक्सपोजिटरी। बच्चे, कहानी को कोट करना इज नॉट नैरेटिव हर्ष। पूरी स्टोरी कहानी नहीं सुना रही है, इट्स एक्सपोजिटरी। ओके, एक्सप्लेनेटरी या एक्सपोजिटरी। क्रैश कोर्स बैच 3 फॉर क्लैट 2022। अभी भी टाइम है, जल्दी से एनरोल कर लो। आई शैल सी यू इन योर ड्रीम एनएलयू देन। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीट बेल्ट लगा ले सब। कुछ नहीं बताऊंगी, पढ़ो पेज, सेंड मी इट डन व्हेन यू आर डन। हर्ष, पढ़ लो। नो, नो दिया, एक्सपोजिटरी। कार्तिक क्लास के एंड में बताऊंगी। गुलशन क्लास के एंड में। So, there was a conversation of the writer with a philosopher about the nature of dissent in an era. Dissent क्या होता है? Oppose करना authority के, है ना? यूएपीए पढ़ा है लॉ, है ना? तो डिसेंट को सप्रेस करने के लिए यूएपीए नहीं, सेडिशन, सेडिशन छाप देंगे. So they were talking about dissent in an era where every message, however revolutionary in origin, gets processed and then ultimately defanged through the practice of elite capture. Defanged उसको बिल्कुल harmless बना दिया जाता है. तो अगर मैं protest करती हूँ against the authority, so everybody will look at the protest, they will analyze the protest, and ultimately they will name it as elite capture. We'll understand why is that elite capture, but it becomes harmless in the end. We touched on the question of real change and how it is easy to see the Black Lives Matter signs in wealthy neighborhoods or watch woke commercials from nefarious multinational corporations. Nefarious is evil. So the author is saying Black Lives Matter. ये dissent था, ये opposition था to the authority and it was revolutionary. लेकिन अगर मैं ये Black Lives Matter sign एक wealthy household में देखती हूँ, एक wealthy surrounding में देखती हूँ, या फिर मैं एक ऐसे organization का ad देखती हूँ which talks about bringing the social change, जो organization खुद एक evil organization है, तो क्या ये real change है या फिर ये एक fake change लाने का तरीका है? Are you trying to pretend something or are you trying to bring in a real change at all? That's what the question is here. Yes. So, multinational corporations and conclude that everything is fake virtue, signaling that nobody is invested in real change. And because of these wealthy neighborhoods and nefarious multinationals bringing in woke commercials, society में change लाने के लिए, because of these things, अगर कोई genuine dissent भी है, you would overlook at that as a fake virtue and not wanting a real change, only for the sake of showing that you're doing things. कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर या बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस आपके दिमाग में आता है जब हम ऐसी लाइंस की बात करते हैं? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूं. क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं लिखा पैंडा, इसलिए. कौन सा आता है? सूडो. आप सूडो बोल सकते हैं. यस.
मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके। आई एग्री टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज नेम्स। द नेम आई वुड नॉट टेक। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। पढ़ो इस पेज को जल्दी से। सेंड मी अ डन व्हेन यू डन। पढ़ लो पेज, पढ़ लो। So now the question is, what's real and what's not real? The second paragraph is tricky, बच्चे ध्यान से पढ़ना। Robin, the GMAT guide. See, the second paragraph is tricky. It goes into the depth of what's real and what's not real. So अभी तक question था that people they show that they're trying to bring in a change, but probably they aren't doing it with their own heart, all their heart. They're doing it in a pseudo manner, only to pretend that they are trying to bring in a change. And but what about less concrete things? नहीं, उससे पहले से पढ़ते हैं. So we can probably all agree, for example, if Roe versus Wade is overturned, it will represent real change in the reproductive health. We're talking about the abortion laws. बहुत टाइम से उस पर डिबेट चल रहा है. I'll not talk about that. I hope you know about that. Okay. So it's about the rights of millions of people, about their reproductive rights, or about their right to have an abortion too. But अगर let's concrete चीजों की बात करते हैं. For example, measures in school. Measures in schools, for example, schools में क्या permissible होना चाहिए, क्या rights होने चाहिए बच्चों के. जब हम बात करते हैं abortion laws की, it's a big propaganda. Okay, and every newspaper is talking about that. तो इसके बारे में हम फिर भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये पास हो जाता है या नहीं पास होता है तो क्या होता है. बट ऐसे छोटे मेजर्स जो कि लेस कंक्रीट है, उनके बारे में क्या रियल है क्या फेक कौन डिसाइड करेगा. सो द डिफरेंस, द डाइकोटमी, द ऑपोजिशन बिटवीन रियल एंड फेक can be found in an article. The title is Woke Capital, the emptiness of woke capital. What's woke capital? That's explained in the passage. It says it's a baseless term. It doesn't have a fixed definition, but in layman term, you can define it as the attempts by corporate American elite culture institutions to gesture towards social justice movements without changing their strange hold and resources. ये कैसा लग रहा है? ये woke culture रियल लग रहा है या फेक लग रहा है? What do you think? According to this book, The Amazon Union Exposes the Emptiness of Woke Capital, is it real or is it fake to bring in a change? What do you think that is? Real or not real? या फिर न्यूयॉर्क प्राइड वीक. हिंदी में समझाती हूँ. इट्स एब्सोल्युटली फेक. वो कैपिटल होता है सोसाइटी में चेंजेस लाऊंगा मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ सोसाइटी में, मैं रिच हूँ सोसाइटी में, मैं चेंजेस लेके आऊंगा, लेकिन मेरे लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करूंगा. मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसको मैं कम नहीं करूंगा. मैं बहुत पैसे बनाऊंगा लेकिन मैं सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करूंगा. मैं पोस्टर चिपका दूंगा मेरे घर के बाहर, ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन मैंने किया क्या उसके लिए? आई डिड नथिंग. दैट्स वोक कैपिटल. माय कैपिटल रिमेन्स द सेम and it's only a way of pretending that I am doing something for the society. Or for example, Chase Bank posted a picture of the rainbow. The rainbow is the icon for the pride, okay, the community. So Instagram account में उन्होंने Pride Week में उसका picture चिपका दिया. But it's a fake change. सिर्फ किसी का फोटो लगा देना कि हम
इक्वलिटी चाहते हैं हर जेंडर की और हर सेक्सुअल प्रेफरेंस की, और हम रेनबो लगा देंगे और हम रेनबो पेंट कर लेंगे. आर यू डूइंग एनीथिंग? आर यू? पता मैं आपको एक बात बताती हूँ. सो आई एम almost 40 years old, and I was born in an era where the LGBTQ had no value, and I was conditioned in a manner where LGBTQ was given negligible rights, and it was wrong. So my religion told me it's wrong, my household told me it's wrong, and I had to change my mindset. And did it happen overnight? No, it didn't. And it would have been woke, it would have been pretentious if I just kept taking Hindu classes on the equality of the LGBTQ, and I would suppress my daughter if one day she decides that she belongs to the LGBTQ community. So I had to condition myself first that I have to be okay with my daughter's sexual preferences, and only then I can be a truly promoter of the LGBTQ. And that starts from your home. और इसीलिए इसको उन्होंने वो कैपिटल बोला है कि जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं चेंज हो रहा तो तुम सोसाइटी में चेंजेस कैसे लेके आओगे? सो दैट्स नॉट रियल. A server's rights, woke capital is just a partisan talking about masquerading. It's a partisan talking point, masquerading as structural analysis. So ये pretentious है, अंदर कुछ और है, दिखाना कुछ और है. It does not truly exist. It's only and only branding. ये सिर्फ ब्रांडिंग है कि हम कर रहे हैं, बट आप कर कुछ नहीं रहे हो. नेक्स्ट पेज पढ़ो. I'm sorry, technology study, no. Yes, it's about the entire LGBTQ, Karthik, the non-binary genders and all people with various kinds of sexual preferences. Okay, I will. Dia, I will. रिलेशनशिप वाला? What are you saying? मुझे याद नहीं आ रहा बच्चे, कुछ और एग्जाम्पल से याद दिलाओ, याद आ जाएगा बच्चे. आपने अपना नाम नहीं लगाया शायद इसलिए मैं भूल गई हूँ. Done. Oh, yes, now I remember. अब याद आया मुझे, टेक्नोलॉजी स्टडी, नाउ आई रिमेम्बर. यस. विच कॉलेज आर यू इन माई चाइल्ड? सो बाय कंट्रास्ट, अब समझ में आ रहा है आर्टिकल? दिया अभी अभी तक का जस्ट ये बताती हूं मैं कि टू ब्रिंग इन अ मैसिव चेंज इन द सोसाइटी, आप डिसेंट करते हो, आप अपोज करते हो अथॉरिटी को, और तभी आप एक बड़ा चेंज लेके आ सकते हो, रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आ सकते हो सोसाइटी में. एंड देयर आर मेनी इन्फ्लुएंशियल पीपल हु जस्ट प्रिटेंड टू ब्रिंग इन अ चेंज, बट वो रियलिटी में कोई चेंज करते नहीं है. वो एक एड बना देंगे, वो एड को प्रमोट कर देंगे हर सोशल मीडियम पे, या फिर वो लोग बताएंगे कि हाँ हाँ हम कर रहे हैं, हम पोस्टर लगा देंगे, बट दे आर नॉट डूइंग एक्चुअली एनीथिंग बिकॉज़ देयर इज नथिंग चेंजिंग बैक देयर एट देयर होम. सो इट्स अबाउट क्या रियल डिसेंट है, क्या रियल चेंज लाने के लिए है, और क्या फेक, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि इन प्रिटेंशियस लोगों के कारण जो रियल चेंज लाना चाहते हैं वो सप्रेस होते हैं. सो दैट्स द आइडिया. Now, by contrast, servers believe that Amazon labor union's improbable victory on State Island and its message to multi-ethnic class boundary solidarity, one that was heard by warehouse workers who came from around the world, constituted real change. ये एक एग्जाम्पल हुआ रियल चेंज का, और प्रीवियस पेज में एग्जाम्पल्स थे फेक चेंजेस के, नॉट रियल चेंजेस के.
He rightfully credits the egalitarian potential of the labor movement. He equality to every labor, to every owner. Yay, that brings in a change and something that is very, very real. Unions can unite workers across ethnic, racial, religious, linguistic barriers with a common interest. अब आप लिंक करो प्रीवियस आर्टिकल से. गल्फ में काम कर रहे थे वर्कर्स क्योंकि वो उनमें इतनी डाइवर्सिटी थी, दे कुड नेवर यूनाइट. बट अगर एम्प्लॉय चाहे दे कैन यूनाइट क्योंकि उन सबका एक ही मोटिव है, इक्वलिटी फॉर एवरी लेबर, डिसेंट वेज, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. तो अगर इनकी यूनिटी हो सकती है, दैट्स ब्रिंगिंग इन अ रियल चेंज. That's an example of real change. Social justice movements and the way public response to them are far more chaotic. Social justice movements का example दीजिए मुझे इंडिया में. कौन देगा example? Oh, okay. So, all right. So you're sitting for 22. Good luck, technology. Give me an example of a social justice movement in India. Yes, Dia. Yes. Nobody? B.R. Ambedkar is the best example of that. Farm laws? Yes. Triple talaq? Yes. Correct? Me Too movement? Yes. All of these are examples of justice given to everyone, considering everyone equal in the society. The Sati Pratha, yeah. The Shabano case, correct. Justice for Dalit, of course. And the LGBTQI, right? तो ये सब कुछ, बट ये बहुत chaotic है क्योंकि आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि कौन रियली चेंज चाहता है और कौन फेक चेंज लेना चाहता है. जैसे एग्जांपल ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट. I felt conflicted about this work. What really did it mean to make an ad about racial justice for the world's biggest brands? Ad बना के क्या होता है? That's what the author is saying. मेरा ओपिनियन अलग है कि ad बनाने से भी शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं. But he says, what happens when you only make ads, but never really question the sincerity of the people who wrote and art directed the ads? So the organization who make ads, according to the author, they are fake. But people who make ads, they are genuine because they have their entire heart coming into the ad. They were trying to make the most change they could in what they knew was a widely broadcast medium. The people who made ads, the creators, and not the organization who purchased the ad. Because making an ad needs a lot of creativity coming from your heart. So the author thinks these organizations are fake, but the ad creators aren't. Coming back to woke capital, it might be annoying to feel inadequate, but I don't see much value in drawing a bright line between the workers who produce it and the people who protest in the streets. They often are the same people, क्योंकि protest भी वही कर रहे हैं जो workers है जिनके साथ injustice हो रहा है. तो ये दोनों ही actually truly support कर रहे हैं इस inequality को खत्म करने के लिए. It might also be tempting to believe that the rich and the powerful all got together to figure out a way to placate social unrest and collectively decided to institute a series of meaningless solutions that would calm everyone down. ये लो सेडिशन. तुमको डिसेंट करना है, ये लो सेडिशन. अभी लगाते तुम्हारे ऊपर सेडिशन. So he says ये जो पावरफुल और रिच है ना, वो सिर्फ इनको दबाने की कोशिश करते हैं. जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है. तो ये कोई अलग नहीं है. ये प्रोटेस्टर्स जेन्युइनली चेंज चाहते हैं. जो प्राइड परेड में पार्टिसिपेट करते हैं वो जेन्युइनली हैं जो चेंज चाहते हैं. And but I think Taiwo's explanation that corporations and elite institutions are responding to real pressure is much more plausible. कि अब प्रेशर आ रहा है तो वो एड्स बना रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में चेंज लाना जरूरी है. Perhaps most important, this, not that, detaches the dissenter from any personal responsibility. क्या मतलब है इस लाइन का? कौन समझाएगा?
एब्सोल्युटली सत्य और नॉन बेलेबल ऑफेंस है बच्चे, पड़े रहोगे जेल में, लड़ते रहोगे बेल के लिए। यस गुलशन, लाइक फार्म लॉ। यस प्रीति, सो आई नॉट गेट इनटू, मैं इसलिए इंडियन एग्जांपल नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा फिर। The author thinks that they write the ads because it's a job they are paid for, but they never understand its value. No, no, no. The author thinks the ones who write ads are genuinely supporting the idea, because making a good ad comes from the heart. And if you don't genuinely support it, you cannot make a good ad. Hi, Shiv. Thank you. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो जुबिनैल में भेजेंगे तुमको सत्य प्रताप, भेजेंगे जरूर। क्या है मतलब लाइन का, दिस और दैट? He is trying to analyze, Shriya. He is trying to analyze. क्या है मतलब दिस और दैट का, कौन बताएगा? Perhaps most important, this, not that, detaches the dissenter from any personal responsibility. Anybody? नहीं आ रहा समझ में? मैं समझाती हूँ, देखो। सो डिसेंटर है, अपोज कर रहा है अथॉरिटी को, ठीक है, बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग इन अ सोशल चेंज, एंड ही डिसाइड्स मुझे इस कॉज को सपोर्ट करना है बिफोर एनीथिंग एल्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड नथिंग एल्स। इट एक्चुअली डिटैचेस द डिसेंडर फ्रॉम एनी पर्सनल, उसका पर्सनल एजेंडा नहीं है, उसको सोसाइटी में चेंज लेके आना है, बाय एंडलेसली जेस्चरिंग टुवर्ड्स रियल चेंज एंड डिसमिसिंग द स्मॉलर बट स्टिल हार्ड फॉट गेन्स। पर्सनल गेन नहीं चाहिए, massive real change in the society chahiye. That's what a dissenter does. It excuses people from taking part in any collective action and protest that does not fulfill their impossible demands. This offers a measure of self-protection as well as for people who ignore the contradiction in their own lives. और ये contradiction ही lead करता है to वो capital, वो जो fake हैं, because there's a contradiction in their own lives. Their lives are different from what actually is portrayed in front of people. Here, that's the last page. Read everyone and send me a done. आयुषी, इसीलिए बोला था सीट बेल्ट लगा लो। ऑथर समझ नहीं आ रहा, ऑथर बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि फेक क्या और रियल क्या है, और उनमें डिफरेंस क्या है, और मैं किसको सपोर्ट करूं। Yes, Shazia, you're right. Yes, Shriya, you're right. Yes, Vikash. फिर से समझाती हो सखी, सीट बेल्ट खोल दी ना तुमने बीच में। Send me done when you're done reading this. Done. So, previous page में the author says there are people who are protesting on streets. Are they doing it really? Yes, they are. But then there are organizations who pretend to protest. There's a difference in their own mindset. There's a difference in their own heart at their own home. And since there's a difference, you will call them fake. Simple uska yahi gist hai. If Stanley, for example, really wants
to challenge inequality on a large scale in a way that doesn't get distracted by smaller victories. Castigating the DEI industry doesn't seem productive. Only an example, reiterating the same fact, explaining the same fact. Same factor. Perhaps he should instead argue that Yale, one of the flagship institutions of privilege, inequality, and roughshod capitalism, should simply not exist. So the author is saying Stanley को अगर challenge करना है inequality को तो छोटी छोटी victories पे ना ध्यान देके सीधा Yale को challenge करें, क्योंकि वो तो epitome है inequality का, privilege का. Yale को करो ना target. ये छोटे छोटे changes से कुछ नहीं होगा अगर change लाना है तो. This summer there will be all manner of slogans and messages about abortion rights. जैसे last summer it was Black Lives Matter, अब abortion right पे होंगे, because that's the in thing these days about equality. सब बोलेंगे, organization भी, people भी, but कौन real है, कौन fake है? Some will come from the most radical people in this country. Others will come from the marketing departments of corporations, because they have to change the image of the corporation, show that the corporation stands with the equality of the people. It is vital not to get caught up in the task of sorting these statements into buckets. The author says, difference करना छोड़ दो, कौन real है, कौन fake है. सब तरह के लोग आएंगे. उनको दो bucket बना के real और fake में डालना जरूरी नहीं है. While questioning the security of those that do not fit into a narrow vision of real change. You don't have to fret about क्या real है, क्या fake है. You need to be participating in bringing a change. What's the tone, everyone? What's the tone? Vikash, nahi. Only, I don't remember the weeks, but only till a specific number of weeks you can get the child aborted, because after that number of weeks, I think it's 20. I don't remember. After that, the child is considered as a human, a living entity, and killing that child is equivalent to murder by our courts. So it's not a fundamental right. Absolutely analytical. He's analyzing kya fake hai, kya real hai. Absolutely analytical. Do you guys remember? 20 weeks. Yeah, I was not wrong. It's 20. Yeah. It is 20. It's analytical. Correct. Okay. नहीं बच्चे सत्य, वो गलत information है आपको. All right. So analytical. बच्चे तब आज का न्यूज़पेपर शेयर नहीं करूंगी बैकग्राउंड में, because already 1 hour long class हो चुकी है. It's going to be extending a lot then. नहीं, ग्रैंडियोस नहीं है टोन बच्चे, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है. No, बड़ा चढ़ा के बोलना is grandiose. Okay, that's not going to be the tone. So I'll wind up the class then. Download the app if you haven't downloaded that yet. आज BBA app पे I'm bringing new questions on course of action. So no, it's not expository, Mahi. It's completely analytical. So शाही intermittently पढ़ सकते हो. Yes. Okay, Movis. But that's not the agenda of the article, Shreya. The whole article is not about criticizing capitalism. आप टोन पूरे आर्टिकल का निकालते हो, है ना? विकाशी, आपका मानना है बच्चे, ये कोर्ट का मानना नहीं है. Okay, 12:30. Okay, 12:30 on the BBA app. I'm taking a class on course of action. Don't miss out on that. Have a very good day, everyone. God bless all of you.